Hello, dear friends. Today we are starting the Coulomb's law, third lecture, along with subtheory and concept based numerical problems. इससे पहले मैं स्टार्ट करूं, आपसे एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहता हूं। अगर आपको वीडियो लेक्चर पसंद आ रहे हैं, then please subscribe it so that you can get notification in time. Go to YouTube channel, like it and refer to others, that is share it. In YouTube channel, go to playlist where all of the video lectures are arranged sequentially, so that if you want to start some particular topic, then you can get that particular lecture easily. Once again, subscribe the channel, like it and share it, and go throughout the lecture. If it is of 1 hour, then go through 1 hour. 50 minutes, go through 50 minutes, then proper knowledge you will get. I am trying to state each and everything so that by hearing only you can note down the lecture, and whenever you find some difficulty, then you can pause and get whatever is written on the board. Okay, let us start now. Today's first topic is Lami's theorem. Lami's theorem. It states that if a body is in force equilibrium under the presence of three forces acting on it, then P upon sine theta, P upon sine alpha is equal to Q upon sine beta is equal to R upon sine gamma, where P, Q and R are the forces and alpha, beta, gamma are the angles between them as shown in the diagram. This is P, this is Q, this is R. This angle, P का opposite angle is alpha, the opposite angle to Q is beta, and opposite angle to R is gamma. This is all about Lami's theorem. Now, the first question on its basis. Question number 1. Two small metallic balls having equally charged and mass of each ball is small m are suspended from a point capital O with the help of a string of length L and are in equilibrium. Find the separation between the charges when L is very large as compared to separation. What we have done, suppose the separation is small r, then what is the distance? This one r by 2, this is also r by 2, this angle is suppose theta, then this is also equal to theta. The weight will be working in downward direction mg. Electrostatic force is working in this direction. This angle will be
90 plus theta, this angle, this tension is exerting force on this body in this direction along the length of the string. This angle is of 90 degree and this whole angle is 180 minus theta. Now F is equal to K Q1 into Q2, both are Q here, upon R square is equal to KQ square by R square from Coulomb's law. Now applying Lamy's theorem, because this block is in equilibrium under the presence of three forces F, mg and tension of the string. Therefore, F upon the opposite angle to F is 180 minus theta, that is sine 180 minus theta is equal to mg upon sine, opposite angle to mg is 90 plus theta, is equal to t upon sine 90, or kq square by r square upon sine theta is equal to mg upon cos theta. Or kq square upon r square, sine theta can be written as theta. Sine theta can be written as perpendicular upon base r by 2 upon l, that is r by 2l, is equal to mg upon, since sine theta is very small, as stated in the question itself, therefore cos theta will come out to be nearly 1, that is 1, or kq square 2l is equal to r cube mg, or r cube is equal to kq square 2kq square l by mg, indicates r is equal to bracket 2k q square l upon mg whole power 1 by 3. This is the simple application of Lamy's theorem. Okay. Now coming to second question. Please write down the question. Two identical balls of mass small m are suspended from a fixed point capital O using two identical strings of length L. If strings are making angle theta with vertical direction, find the charge on each ball. Let us assume that charge be small q, and we have to find the magnitude of small q. If this angle is theta, this is 90 plus theta, as we have done in earlier question. This is 90 degree and this is 180 minus theta. This distance will be r by 2. If total distance is r, suppose it is given the question. Yeah. Now
R by 2 upon L is equal to sine theta. R is equal to 2L sine theta. Equation number 1. F is equal to KQ square upon R square is equal to KQ square. R equal to 12 sine theta, 4L square sine square theta. Equation number 2. Applying Lami's theorem, F upon sine 180 minus theta. F upon sine 180 minus theta. Sine 180 minus theta can be written as sine theta is equal to mg upon sine 90 plus theta. Sine 90 plus theta is equal to cos theta is equal to t upon sine 90, that is 1. Or kq square upon 4L square sine square theta into sine theta is equal to mg upon cos theta. Or q square is equal to 4mg L square sine cube theta upon k cos theta. Or q is equal to under root 4mg L square sine cube theta upon k cos theta. Suppose if it is given the question that L is very long as compared to R, then sine cos theta can be eliminated by putting the value of cos theta to be 1. Then simply k will be here. This k will be placed by 1 upon 4 pi epsilon naught. That will come into numerator. Okay, now coming to third question number 3. Two identical balls, each of mass 100 gram, and having charge 2 into 10 power minus 7 Coulomb, each of mass 100 gram and charge 2 into 10 power minus 7 Coulomb are suspended from a fixed point O using two ideal threads of 50 centimeter long. They are kept at separation 5 centimeter. When released, find part A. Force along the length of the string acting on the body. Force along the length of the string acting on the body. Force acting on the body perpendicular to the length of the string. C. Net force acting on the ball. And D. Acceleration at the instant they were released at 5 centimeter distance. Now the weight will be acting in this direction, 0.1 and 9.8 mg is equal to 0.98 Newton. Electrostatic force is acting in this way. Tension here, and suppose this angle to be theta. Then solution में हम देखें अगर sin theta is equal to 2.5
This is the 2.5 centimeter, half of the total distance between them. Sine theta perpendicular upon hypotenuse, that is 50 centimeter, is equal to 1 by 20. Indicates cos theta is equal to under root 1 minus sine square theta is equal to under root 399 by 400, almost equal to 1. The Coulombian force F, electrical force I mean to say, kq square by r square, k 9 to 10 power 9, q square 2 into the 4 10 power minus 14 upon 5 का square 25 into 10 power minus 4, because centimeter में इस वजह से, is equal to 1.44 meter. Now this is the part A. Now coming to part B. This is the angle theta. mg का component इधर, mg cos theta. Cos theta is almost 1. It is almost equal to mg. It is mg sin theta. This angle is theta. ज्योमेट्री से देख लीजिएगा, f cos theta, इधर f sin theta. टेंशन. Now part B. Part B, not part B. This is the electrostatic force. Part A is here. Force on the body along the length of the string. Since ball will not move along the length of the string, therefore the net force on the ball along the length of the string must be equal to 0. This is totally conceptual question. Now part B. Part B. Perpendicular to it. This is 0.98. When I will divide it, mg sin theta is equal to 1 by 20. तो 20 से डिवाइड करूंगा तो ये फोर्स बहुत छोटा आ जाएगा. f cos theta is equal to almost f के कंपेरिजन में. Therefore, f force perpendicular to it is equal to f cos theta minus mg sin theta. 1.44 into almost 1 minus 0.98 into 1 by 20. 1.44 minus 49123. 144 349 13493 1 Newton. For F net, because the force acting on the block along the length of the string is 0 and in perpendicular direction is equal to 1.391 Newton. So the net force acting on the block will be equal to this one. So the part C is F net is equal to F perpendicular is equal to 1.391 Newton. 1.391 Newton. D. Acceleration is equal to F net upon mass is equal to 1.391 upon 0.1 is equal to 13.91 meter per second square. Now question number 4. This is now coming to question number 4. Two small balls of mass small m, radius small r, and charge small q
are suspended in air using a string of length L from a fixed point. From a fixed point O. The angle the string makes with vertical direction is theta. Now the whole setup is submerged in a liquid of density rho and dielectric constant capital K. The angle which the thread makes with vertical direction remains unchanged. Find the dielectric constant of the liquid. This is a question. समझ ले एक बार. पहले केस में जब ये एयर में है उस केस में क्या होगा, हम यहाँ पे एयर लिख देते हैं. जिसे में ध्यान रहे इसका mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में वर्क करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स F इधर वर्क करेगा, ये वाला एंगल 90 प्लस थीटा होगा, ये 90 होगा और ये 180 माइनस थीटा होगा. अगर यहाँ पे हम एयर की बात करें इन एयर तो हम कह सकते हैं F अपॉन साइन 180 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा इक्वल टू mg अपॉन साइन 90 प्लस थीटा cos थीटा इक्वल टू t अपॉन 1. Therefore tan थीटा साइन थीटा उधर पड़ जाए, tan थीटा इक्वल टू f बाई mg k q स्क्वायर बाई ये जो डिस्टेंस हो जाएगा L साइन थीटा हो जाएगा. टोटल डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक 2L साइन थीटा हो जाएगा. तो 2L साइन थीटा का होल स्क्वायर 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन mg इक्वल टू k q स्क्वायर tan थीटा इक्वल टू 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा mg. इज दिस क्लियर? हमें केवल ये रिजल्ट याद रखना है, केवल हमें ये रिजल्ट याद रखना है. नाउ in the second part in liquid, भाई लिक्विड में क्या होगा, बायंसी फोर्स ऊपर की तरफ वर्क करने लगेगा. जो रेडियस दिया हुआ था इसका इसीलिए दिया हुआ था जिससे बायंसी फोर्स हमें निकल के आ जाए. नाउ न्यू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विल बी F डैश बिकॉज डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट K मान लेते हैं लिक्विड का, जिसकी वैल्यू निकालनी है तो ये फोर्स पहले से कम हो जाएगा. तो हम यहाँ पे अगर F डैश की बात करें then it comes out to be 1 upon 4 pi epsilon naught into K into चार्ज तो भाई सेम है Q स्क्वायर, डिस्टेंस भी सेम है 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जैसे पिछले क्वेश्चन में होगा. नाउ apparent weight इसको हम W डैश मान लें. दिस W डैश इक्वल टू भाई mg तो नीचे काम कर रहा है, बायंसी फोर्स ऊपर की तरफ काम कर रहा होगा. दिस कम्स आउट टू बी mg. What is the buoyancy force?
वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस एट द बॉडी। ये क्योंकि बॉडी स्फेरिकल है और कंप्लीटली इनसाइड द लिक्विड है, तो अपने वॉल्यूम के बराबर लिक्विड डिस्प्लेस करेंगे। इसका वॉल्यूम होगा स्फेरिकल की वजह से 4/3 आया क्यूब, डेंसिटी इज रो इंटू जी। इज दिस क्लियर? नो, इसकी मुझे जरूरत है, इसकी मुझे जरूरत है। When W dash you have taken equal to this much, means 1/4 this, 2/4 is this, and 3/4 T dash here, it disappears. Because we have taken into account the buoyancy force in the apparent weight of the body. So, applying Lami's theorem, F dash upon sin theta, F dash upon sin 180 minus theta is equal to sin theta is equal to W dash upon sin 90 plus theta cos theta is equal to T dash by 1, or tan theta is equal to F dash upon W dash is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught K Q square by 4L square sin square theta upon W dash mg minus 4/3 pi r cube into density of the liquid। फिर देख लें टेन थीटा वाली चीजें, ये इक्वेशन नंबर 2। From equation number 1 and 2, tan theta equal है this k 1 upon 4 pi epsilon naught q, this k I have written 1/4 pi epsilon naught into q square upon 4L square sin square theta into mg is equal to this force 1 upon 4 pi epsilon naught k, डायरेक्टली कांस्टेंट की वैल्यू निकालनी है, क्यू स्क्वायर अपॉन 4L स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन mg माइनस 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो। वन बाई फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 pi epsilon naught, q square से q square cancel, 4L square sin square theta, 4L square sin square theta cancel, and it is equal to 1 upon mg is equal to 1 upon k mg minus 4/3 pi r cube into rho, और k is equal to mg upon mg minus 4/3 pi r cube into rho. This can be treated as a formula for which the angle remains the same when the body is suspended in air and then in a liquid of the elastic constant k and density rho. The radius of the body is small r. This is the formula there. Clear? Please हर क्वेश्चन को वर्कआउट करते समय इस बात का ध्यान रखिए कि वो आपको प्रॉपर्ली समझ में आ गया हो। नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में बात कह सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज मुझे भेज सकते हैं, ठीक, नंबर मैं लास्ट में दे दूंगा। नाउ व्हाट अबाउट सिंपल हार्मोनिक मोशन? क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक मोशन से भी रिलेटेड होते हैं, तो हमको उसको भी देखना है। सिंपल हार्मोनिक मोशन का बेसिक कंसेप्ट क्या है? बॉडी हमेशा अपने स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट में रहती है। जब उसको उसके स्टेबल इक्विलिब्रियम से हम स्लाइटली डिस्प्लेस करते हैं, क्योंकि स्टेबल इक्विलिब्रियम स्टेट में पोटेंशियल एनर्जी बॉडी की मिनिमम होती है, तो मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी को वो फिर से रिटेन करने का प्रयास करती है, रीगेन करने का प्रयास करती है, उस पर रीस्टोरिंग फोर्स काम करता है। लेकिन जब बॉडी अपनी मीन पोजीशन पहुंचती है तो उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी आ चुकी होती है, जिसकी वजह से वो अपनी मीन पोजीशन को क्रॉस करके दूसरे डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो जाती है। फिर उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, इंक्रीज कर जाती है, फिर वो दोबारा रीगेन करने का प्रयास करती है, वापस अपने इनिशियल स्टेट पे आती है, अगेन उस पर काइनेटिक एनर्जी उसकी इंक्रीज कर जाती है,
फर्स्ट डायरेक्शन में वो डिस्प्लेस हो जाती है। ये प्रोसेस लगातार वो रिपीट करती रहती है, इनफाइनाइट टाइम तक रिपीट कर सकती है अगर वहाँ पे कोई विस्कस फोर्स या रिटार्डिंग फोर्स उस पर वर्क ना कर रहा हो। रिटार्डिंग मींस कोई ऐसा फोर्स वर्क ना कर रहा हो जिसमें जो वर्क डन हो दोबारा रीगेन ना हो पाए। क्लियर? कैसे इसके क्वेश्चंस को हम वर्कआउट करेंगे उसको हम देखते हैं पहले। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, 2 point charges of magnitude capital Q each are at distance small d a body of mass small m and charge small q is kept at its perpendicular bisector at x distance from its mean position. Find the resultant force acting on the body. Part 1, F resultant. Part B, at what value of x this force will be maximum. F maximum x equal to what? Part C, under what condition it will perform SHM. Under what condition it will perform an SHM and what will be its time period. These are the 4 parts we have to solve out. हर एक पार्ट एक दूसरे से कनेक्टेड। यहां से हमने इसको ज्वाइन किया। चार्जेस का नेचर ही दिया हुआ है इसलिए हम पहले इसको लाइक चार्जेस लेके ही चलेंगे। बाद में कंडीशन में हो सकता है यहाँ लाइक चार्ज आ जाए, लेकिन अभी लाइक लेके चलेंगे। दिस फोर्स इज F1 एंड दिस इज F2 फोर्स। ये भी F1 के इक्वल ही आ जाएगा क्योंकि डिस्टेंस बराबर है, चार्ज के मैग्नीट्यूड बराबर है। यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस d/2, देन इट इज इक्वल टू d²/4 प्लस x² स्क्वायर d²/4 प्लस x² स्क्वायर। फर्स्ट केस या F1 इज इक्वल टू F2 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट capital Q small q upon distance square that is d²/4 plus x². Clear? Now suppose this angle is theta, this will be theta. These two triangles, this triangle and this triangle are congruent triangle. Therefore, this angle is also equal to theta. This is also equal to theta. इसका कंपोनेंट F1 का कंपोनेंट अगर हम इस डायरेक्शन में देखेंगे तो ये आ जाएगा F1 sin थीटा, इधर आ जाएगा F1 cos थीटा। सिमिलरली F2 cos थीटा, F2 sin थीटा। F1 F2 are equal and opposite, therefore cancel out each other. Hence resultant force F is equal to 2F1 cos theta 2F1 into cos theta. Cos theta is equal to base upon hypotenuse. Is equal to, इसको अभी हम थोड़ी देर के लिए k रख देते हैं। 2 कैपिटल Q स्मॉल q x d²/4 प्लस x² पावर 3/2। दिस इज द रिजल्टेंट फोर्स। फर्स्ट केस। नाउ x की किस वैल्यू के लिए फोर्स मैक्सिमम होगा और कितना होगा, ठीक है। B part, K constant, capital Q, small q and D is constant. Only x is variable. x को चेंज करके हमें पता करना है किस वैल्यू x की किस वैल्यू पे ये फोर्स मैक्सिमम होगा।
means df by dx must be equal to 0. भाई 2 कांस्टेंट होगा k, तो यहां से 2k कैपिटल Q स्मॉल q d बाई डी एक्स अपॉन डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3 बाई 2 इक्वल टू 0. ये राइट हैंड साइड जाएगा 0 अपॉन दिस मच इक्वल टू 0 रहेगा. इसको डिफरेंशिएट करें तो सबसे पहले हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, 1 आ जाएगा इंटू दिस माइनस, इसको ऐसे ही रहने दें. इसको डिफरेंशिएट करें 3 बाई 2 चेन रूल यूज करेंगे, डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर 1 बाई 2 into 2x upon d स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर, इस पूरे का होल स्क्वायर करेंगे क्यूब आ जाएगा. ये राइट हैंड साइड जाएगा इक्वल टू 0 होना चाहिए. यहाँ पे राइट हैंड साइड जाएगा 0 से मल्टीप्लाई बाई 0 रह जाएगा. इन दोनों में हम कॉम 2 से बाई 2 कैंसिल हो जाएगा. डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर स्क्वायर रूट यानी 1 बाई 2 पावर कॉमन आ जाएगा. यहाँ बचेगा डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, ये तो कॉमन ले लिया 3 इंटू एक्स एक्स 3 एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0. भाई ये तो 0 हो नहीं सकता, तो इसको 0 होना चाहिए. ये 0 क्यों नहीं हो सकता? दोनों स्क्वायर है, दोनों ही डिस्टेंस से पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव तो होंगे नहीं, तो ये 0 नहीं हो सकता. Therefore, d square by 4 minus 2x square equal to 0. 2x square equal to d square by 4 indicates x square equal to d square by 2 into 4 equal to x square x equal to d by plus minus 2 root 2. This force will be maximum when the value of x is equal to d upon 2 root 2. And what will the magnitude of this force? What will be the magnitude of this force? F maximum, ये पार्ट बी ही चल रहा है. F maximum is equal to 2k capital Q small q into x d upon 2 root 2 अपॉन d स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर था तो उसके पे d स्क्वायर बाई 8. टू से 2 कैंसिल हो जाएगा. k कैपिटल Q स्मॉल q d अपॉन रूट 2 डी स्क्वायर बाई 4 प्लस डी स्क्वायर बाई 8. डी का हम बाहर ले लें, डी स्क्वायर बाई 4 हम बाहर ले लें तो डी का क्यूब आ जाएगा अपॉन 8 1 प्लस 1 बाई 2 पावर 3 बाई 2. 8k कैपिटल Q स्मॉल q d अपॉन रूट 2 डी क्यूब इंटू इट इज 3 बाई 2 3 रूट 3 अपॉन 2 रूट 2. रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा. 16 कैपिटल K कैपिटल Q स्मॉल q d अपॉन 3 रूट 3 d क्यूब. Now, what is the condition? Part C. What is the condition for which the body will perform SHM? What is the condition for which the body will perform SHM? Part C. यहाँ पे फोर्स देखिए, फोर्स मेरे पास आ गया था कैपिटल K 2 कैपिटल K कैपिटल Q स्मॉल q x अपॉन अंडर रूट डी स्क्वायर बाई 4 प्लस एक्स स्क्वायर पावर होल पावर 3 बाई 2. तो यहाँ पे जो चीज आ गई हमारे पास, यहाँ पे मैं फॉर्मूला ले देता हूँ. फोर्स आ गया था 2 कैपिटल K कैपिटल Q स्मॉल q x अपॉन
d square by 4 plus x square power 3 by 2. Means when x is equal to 0, this force will be 0. Then this is the mean position. हमने अगर यहाँ पे डिस्प्लेस किया था तो फोर्स इस डायरेक्शन में, फोर्स को अभी हमारा इस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, हमें रीस्टोरिंग फोर्स इस डायरेक्शन में चाहिए था. ये तभी पॉसिबल था है जब ये दोनों तो लाइक चार्ज होंगे, जब इस पे अट्रैक्टिव फोर्स काम करे. इस पे अट्रैक्टिव फोर्स तभी काम करेगा, इनवर्ट फोर्स तभी काम करेगा जब ये अनलाइक चार्ज होगा कैपिटल क्यू पे. द फर्स्ट कंडीशन दैट स्मॉल क्यू बी अनलाइक चार्ज टू कैपिटल क्यू. नाउ F रिजल्टेंट फोर्स हमने कहा था 2 कैपिटल K कैपिटल Q स्मॉल q x अपॉन d स्क्वायर बाई 4 प्लस x स्क्वायर पावर 3 बाई 2. H small q is the unlike charge, the resultant force will act in this direction, in downward direction, not in upward direction. अगर हम इसको रिप्लेस करें दूसरे डायग्राम से तो हम यहां पे ये कह सकते हैं भाई चार्ज के मैग्नीट्यूड के चेंज करने से फोर्स चेंज होगा और चार्ज का साइन चेंज करने से केवल उसका डायरेक्शन रिवर्स कर जाएगी. तो ये कैपिटल क्यू है, ये भी कैपिटल क्यू है. यहां से x डिस्टेंस पे स्मॉल क्यू चार्ज रखा, फोर्स ऊपर की तरफ काम कर रहा था, अब फोर्स इधर काम करेगा. यहां से ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट x था, ये मीन पोजीशन थी बिकॉज हियर नेट फोर्स वाज 0. तो मीन पोजीशन वही होगी जहां पे नेट फोर्स 0 वर्क करेगा. तो पहली बात तो ये है, तो हमने डिस्प्लेस ऊपर डायरेक्शन किया और फोर्स डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है जबकि क्यू अनलाइक चार्ज है कैपिटल क्यू के, तो उस डायरेक्शन कंपनसेट करने के लिए माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा. दैट वाज द फर्स्ट कंडीशन. सेकंड कंडीशन दैट x is much smaller than d by 2. It indicates x square plus d square by 4 equal to d square by 4. X square can be ignored. Therefore, f is equal to minus 2 capital K small q x upon d square by 4 power 3 by 2 minus 2k x dq by 8 is equal to minus 16 capital K capital Q small q by dq into x. Therefore, acceleration is equal to minus x is equal to force upon mass of the body. Inch constant, capital K is constant, capital Q is constant, small q is constant, m mass of the body is constant, d is constant. Therefore, A is proportional to minus x. Hence, it will perform simple harmonic motion. In that case, omega is equal to under root. ये भाई जो ब्रैकेट के अंदर लिखा हुआ ना, whatever is written inside the bracket will work as a angular speed of the body, square of angular speed of body. So this comes out. और टाइम पीरियड 2 पाई बाई ओमेगा होता है, हमें पता है ना. 2 पाई ऐसे रहेगा अंडर रूट एम डी क्यूब. भाई ये डिनोमिनेटर तो ऊपर आ जाएगा, एम डी क्यूब अपॉन 16 कैपिटल के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू. बाकी डिफरेंट फॉर्म में आप इसको सिंप्लीफाई करते रहेंगे, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम, बट इट कैन बी डन इन दिस वे. क्लियर? चलो, नाउ क्वेश्चन नंबर 6. क्वेश्चन नंबर 6. Now question number 6, which is based upon simple harmonic motion. Suppose the question is two charges each of magnitude capital Q
are fixed at small d separation. A third charge, small q, of mass small m, is kept at its center. Full stop. Now it is displaced slightly by displacement x. Find the resultant force acting on it and under what condition it will perform simple harmonic motion and what will be its time period. At this position, the distance from here to here is equal to d by 2. Initially, when it was not displaced, it is d by 2 because this position was the midpoint. Suppose this position is O and this is displaced position x. This charge is exerting F1 force here and this charge, suppose it is exerting F2 force here. Distance from here to this point, d by 2 plus x, from this point to this, d by 2 minus x. Therefore, F1 force acting on this charge due to this charge capital Q is equal to K capital Q small q upon d by 2 plus x whole square. Similarly, F2 force acting on this charge due to this charge is equal to K capital Q small q upon d by 2 minus x whole square. Obviously, ये चार्ज इसके पास ज्यादा है तो ये ज्यादा फोर्स एक्सर्ट करेगा, इसका डिनोमिनेटर कम है, ये F2 ज्यादा होगा F1 से. Therefore, resultant force acting on the charged particle F is equal to F2 minus F1. इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करें, न्यूमरेटर दोनों में कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आएगा 1 अपॉन d by 2 minus x whole square minus 1 upon d by 2 plus x whole square is equal to K capital Q small q d by 2 minus x whole square d by 2 plus x whole square d by 2 plus x whole square minus d by 2 minus x whole square. इसको अगर हम वर्कआउट करें तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा डी स्क्वायर बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा 2 dx इक्वल टू 2 कैपिटल के x upon d square by 4 minus x square. This resultant force will be in this direction. It means that if these charges are like charges, then the resultant force acting at the displaced position will behave just like restoring force, which will force the body to move towards the initial equilibrium position. Hence, the body will perform simple harmonic motion. Clear? Taking sign into account, displacement in this direction, relative force in this direction, we can say F is equal to minus 2 capital Q x upon d square by 4 minus x square whole square. What is the condition? These three charges must be like charges. The first thing. Now, second thing, this x must be very small. This x displacement must be very small as compared to d by 2. If x square is very much smaller than d by 4, then x square plus d square by 4
d square by 4 minus f square is equal to d square by 4. Therefore, f is equal to minus 2 capital K capital Q small q by d cube by 8 into x. Or ma is equal to minus 2 capital 16 K capital Q small q by d cube into x. Or k is equal to minus 16 K capital Q small q by md cube into x. Or a proportional to minus x. It will perform simple harmonic motion. In that case, this is equal to omega square. Or t is equal to 2 pi by omega. 2 pi by omega square डिनोमीटर में ले जाएंगे तो अपोजिट हो जाएगा md cube upon 16 capital K capital Q small q. This is the time period. This is the time period. This much concept of simple harmonic motion is applicable here. A number of questions are there, but start at the very first time. In electrostatics, if these questions we are getting in a proper way, then we can come to other questions which are somewhat difficult. And those questions I will provide in a video which will be named as question pertaining to entrance examination view. Question just like to entrance examination view. Then I will mention it already before giving some video to you. Okay, now coming to next theory. Distribution of charge. Distribution of charge. Whatever I will say about distribution of charge, the same thing is applicable in 100% way to distribution of mass also. So there are three types of distribution of charge. Number one, linear distribution of charge. If the charge is uniformly distributed over length, then charge per unit length is called linear charge distribution. Yeah, linear charge density, it is denoted by lambda. Lambda is equal to charge upon length, total length. Its unit is Coulomb, length meter inverse 1. Number two, area or surface charge distribution. Charge per unit area is called surface or area charge distribution. That is, it is denoted by sigma. Sigma is equal to Q by capital A. Its unit is Coulomb per meter square. C. Volume or cubic charge distribution. Charge per unit volume. Charge per unit volume is called volume charge density or cubic charge density, denoted by rho. Rho is equal to total charge upon total volume. Its unit is Coulomb per meter cube. Clear? Please write it down. Now, one major portion, that is graph related to Coulomb's law. Graph. Whatever I am teaching to you, whatever I am telling to you is just
related to CBSE board, ICSE board. And if you are understanding these things quite well, whatever the question paper in the examination is, you have not to be panic, and you are certainly going to get more than 65 marks out of 70. But if you are saying that no, this is not given inside my book, then in application a number of problems are given there without mentioning whether it is inside the syllabus or outside the syllabus. And for the last 6 to 7 years, it is seen that physics paper becomes more difficult in comparison to math and chemistry and other subject papers. And there is a great panic during the examination period when the physics paper is discussed a number of times without any result. So have faith in yourself. If you are studying all the things in proper way and you are finding some difficulty, please comment me. Please send message to me on the WhatsApp number 9411919872 by giving your name, your school name, your district name, and your state name. Okay, now about graph. First one, what is Coulomb's law? F is equal to K Q1 Q2 by R square. Suppose this is a force Q. This is Q1 or Q2. Simply in this way. Because F is directly proportional to Q1 or F is directly proportional to Q2. Clear? In second case, this is F and this is R. We know that F is inversely proportional to R square. What graph we are going to get? Simply this much. Simply this one. Whenever any proportionality is there, which is 1 upon R square, the same graph you are going to get, whether it is electrostatic, whether it is Coulomb's force, or it is electric field, or it is gravitational field, or any other type of, when there is anything proportionality of 1 upon R square, this graph you are going to get. Clear? No problem? Yes. Now, one more question. A charge capital Q is divided into two parts, and then these parts are kept at certain distance or separation. Find the magnitude of each part so that the force acting between them is maximum. The solution में हम देखेंगे, let one part be small q, then other part is capital Q minus small q. Force is equal to K one part, other part upon separation square. What is variable here? Capital Q is given, small q is variable. Then we have to differentiate or maximize for it. Or df by dq we have to place equal to 0. K constant, R is constant. K upon R square d by dt. Multiply this. This is constant, this is constant. ये राइट हैंड साइड जाएगा, इसकी वैल्यू 0 ही रहेगी. मल्टीप्लाई होगा, डिवाइड होकर 0 ही रहेगा. इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो q d by dq into q minus d by dq into q square is equal to 0. q into 1 minus 2q is equal to 0. Or q is equal to q by 2.
Therefore, maximum force is equal to capital K Q by 2 into Q by 2 upon R square. KQ square by 4R square. Simple. Now, coming to next topic, that is electric field. That will be delivered in the next lecture, next video. In this video, some other things we are going to understand. One, somewhat difficult. It is not difficult, but it is assumed to be difficult. I think it is simple one. It is simple one. Suppose a conductor of length L be having charge small q. A charge small q is kept at small r perpendicular distance from the conductor. We have to find net force acting on this small q charge due to this conductor. This is the part. So, this is the question number 8. Linear charge density is equal to total charge upon total length of the conductor, lambda. What we have to do from the position where the small q charge is kept at angular position theta, a very small angle d theta is taken for a very small element of length dl on the conductor, upon which we can assume to be dq charge the conductor of length dl is having here. इस पॉइंट को A मान लें, इसको B मान लें, इसको P मान लें, इस पॉइंट को ओरिजिन मान लें, O मान लें, यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, इस पॉइंट को K मान लें, इस पॉइंट को K मान लें. भाई ये A है, ये पॉइंट B है, ये वाला पॉइंट K. हमने कहा इन ट्रायंगल POA, PA is hypotenuse, base is given to us, hypotenuse is to base into sec of the angle theta. Now AK is sustaining the d theta at point P. PA is almost equal to PK. Therefore, any circle which is drawn keep maintaining center of the circle at point P and radius PA will pass through K also, and AK will act as an arc. AK is equal to PA into d theta. Arc is equal to PA radius into d theta is the angle. R sec theta d theta. Now, in this triangle AKB, K is the right angle. This one angle is equal to 90 minus theta. This 90, then this angle comes out to be theta. Then DL is equal to AB is equal to AK sec theta is equal to R square R sec square theta d theta. लेंथ वाइज आप पता चल गई एलिमेंट की, ये एलिमेंट हमने चूज किया था. देन DL पे जो चार्ज होगा DQ हमने सपोज किया था लैम्डा इंटू DL इज इक्वल टू लैम्डा R
sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। क्लियर? बस यहां तक इसको देख लें। इसकी वजह से एलिमेंट बहुत छोटा है, ए बी, डी थीटा इज टेंडिंग टुवर्ड्स जीरो, देयरफॉर ए बी विल बी ए पॉइंट एलिमेंट ऑफ लेंथ टू मच स्मॉल इन टर्म्स ऑफ डी। इस पे जो फोर्स वर्क करेगा डी एफ विल बी अलोंग दिस वन। ये थीटा एंगल है तो ये भी एंगल थीटा होगा, इसका कंपोनेंट डी एफ कॉस थीटा इधर आ जाएगा, डी एफ कॉस थीटा एंड डी एफ साइन थीटा हियर। क्लियर? हियर डी एफ हम लिखेंगे डी एफ इक्वल टू कूलम्ब्स लॉ अप्लाई करेंगे इंटू डी क्यू इंटू क्यू अपॉन यहां से यहां तक की डिस्टेंस पी ए स्क्वायर इक्वल टू के डी क्यू लैम्डा आर, यहां से सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा इंटू क्यू अपॉन पी ए स्क्वायर, पी ए इक्वल टू दिस वन आर सेक थीटा, पी ए स्क्वायर आर सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर एक आर से एक आर कैंसिल हो जाएगा, यहां पे जो आ जाएगा के लैम्डा पाई आर क्यू इंटू डी थीटा। क्लियर? हमने क्या किया, इसको एक्स एक्सिस सपोज कर लिया, इसको वाई एक्सिस सपोज कर लिया। डी एफ एक्स इक्वल टू डी एफ कॉस थीटा इक्वल टू के लैम्डा क्यू अपॉन आर कॉस थीटा डी थीटा। Therefore, fx इक्वल टू इंटीग्रेशन डी एफ एक्स। भाई साहब के कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेट करेंगे ना पूरे को, इस पूरे को इंटीग्रेट करेंगे। के कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, क्यू कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, केवल कॉस थीटा वेरिएबल है क्योंकि थीटा वेरिएबल डी थीटा है ना। अब हमने क्या किया, इसके एंड पॉइंट को ज्वाइन किया, दिस इज, इसको हमने लिया थीटा वन एंगल, इसको लिया माइनस थीटा टू एंगल, इसको माइनस थीटा टू से थीटा वन तक इंटीग्रेट किया। इट कम्स आउट टू बी के लैम्डा क्यू बाई आर। कॉस थीटा का इंटीग्रेशन जो होता है वो साइन थीटा होता है, माइनस थीटा टू टू थीटा वन के लैम्डा क्यू बाई आर साइन थीटा वन प्लस साइन थीटा टू आ जाएगा, इक्वल टू के लैम्डा क्यू बाई आर साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला हम अगर अप्लाई करें तो टू आ जाएगा, साइन थीटा वन प्लस थीटा टू बाई टू cos theta 1 minus theta 2 by 2. This is the equation number 1. This is equal to fx. In the same way, if we calculate d fy, then it is equal to df sin theta is equal to k lambda q by r sin theta d theta. Therefore fy is equal to, इंटीग्रेट करेंगे dfy को, क्लियर? k कांस्टेंट है, लैम्डा कांस्टेंट है, q कांस्टेंट है छोटा वाला, r कांस्टेंट है, साइन थीटा
डी थीटा, यहाँ फिर से माइनस थीटा 2 को थीटा 1 तक इंटीग्रेट करेंगे। हमें ये पता है साइन थीटा का डिफरेंशिएशन नहीं, इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा आता है। This comes out to be k lambda cube by r minus cos theta 1 plus cos theta 2 और k lambda cube by r cos c minus cos d 2 sin theta 1 minus theta 2 by 2 sin theta 1 plus theta 2 by 2. H f is equal to reluctant force equal to f x square plus f y square. भाई देखो इस पूरे का स्क्वायर करोगे ना, k लैम्डा क्यू आर, k लैम्डा क्यू आर 2r है, इन सबका स्क्वायर होगा तो वो सब बाहर आ जाएगा, 2k लैम्डा क्यू बाई आर, ये सब बाहर आ जाएगा। यहाँ पे साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 बाई 2 भी है, तो साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस थीटा बाई 2 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2 प्लस cos square theta 1 minus theta 2 by 2. It comes out to be 1. Therefore, resultant force F is equal to 2k lambda q by r sin theta 1 plus theta 2 by 2. लैम्डा क्यू बाई एल था हमारे लिए 2k कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर एल साइन थीटा 1 प्लस थीटा 2 बाई 2। Now if it is making angle alpha with x-axis, then what we have to write? Tan alpha is equal to fy by fx. भाई fy और ये fx है, k लैम्डा क्यू आर कैंसिल हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा साइन थीटा 1 माइनस थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2। कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 बाई 2 रख कर दे। is equal to tan theta 1 minus theta 2 by 2. Therefore, alpha is equal to theta 1 minus theta 2 by 2. यहाँ पे देखिए मेरे पास कंडक्टर ये था, यहाँ पे पॉइंट P था, चार्ज Q रखा हुआ था, और ये एंगल मेरे पास थीटा 1 था, ये थीटा 2 था। अगर इधर का कंडक्टर ज्यादा होगा, ये लेंथ ज्यादा होगी तो थीटा 1 अधिक होगा, तो उस केस में रिलेटेड फोर्स नीचे की तरफ आएगा, और अगर ये ज्यादा होगा, थीटा 2 ज्यादा होगा थीटा 1 से, तो फोर्स ऊपर की तरफ आएगा।
ये हमें यहाँ पे याद रखना होगा। क्लियर? आज इतना ही। ठीक, एक चीज फिर से लास्ट में, सब्सक्राइब, like and share my channel to those who require it. And if you are getting something from my channel, then please do these things, as it encourages me, and time by time I will provide more and more numerical problems, theoretical problems. In next lecture we are going to study elliptic field. Goodbye.